welcome to all my beautiful ladies to this special workshop, which is a year-end workshop, which makes it more important for all of us. And yes, I am one of the pilot trainers from the course Tech Ninja. Obviously, this is the opportunity. I am thankful to the owners and our head of the organization, Mandeep ma'am, for appointing us on such a role and having full faith and trust on us, which makes us also to work and perform the best. And last but not the least, the students, the love you pour on us works as a motivation, the energy, gives the energy, lovely feedbacks from you all. कि मैम आप टेक्नोलॉजी इतने इजी कैसे सिखा देते हो, आप एक्सेल में फॉर्मूला इतने इजी कैसे कर देते हो. सो इफ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, इट हैज बिकम द बैकबोन ऑफ एवरी सेक्टर. अगर हम बोलते हैं हाउसवाइफ को टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, भैया सब्जी वाला भी आजकल बोलता है जीपे करा लो, मैम छुट्टा नहीं है तो जीपे कर देते हैं. बच्चे बोलते हैं मम्मा आप मेरे स्कूल में जाके क्या बात करोगे, विल एनीवन एक्सेप्ट कि मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है आप मेरी मैम से क्या बात करोगे? नो. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में तो स्कूल्स भी सारा अपना जितना उनका करिकुलम है, डेट्स है, डेट शीट है, एडमिशन की कोई है, कोई उनकी को करिकुलर एक्टिविटी है, सब तो व्हाट्सएप पे आ रहा है, सब तो आप ईमेल से कनेक्टेड हो. तो इवन अ हाउसवाइफ नीड्स, बिकॉज शी हैज टू स्टैंड अप विद द चाइल्ड आल्सो. Exactly. I do agree with you, Shefali, on this thing, because the time has changed now, even after, especially after the COVID. Now everything is virtually connected with us, even documents, everything is coming on, the WhatsApp only. She's absolutely right. एंड फॉर द ग्रोन अप्स जो बोल सोच रहे होंगे हमारे बच्चे बड़े हो गए मैम, तो फॉर यू गाइस बच्चे तो चले गए, बड़े हो गए, आई डू अग्री, दे आर टेक सेवी, दे आर इन द ऑफिसेज. आपको इमीडिएटली मेडिसिन मंगानी है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, द चाइल्ड इज बिजी इन द मीटिंग, विल यू वेट फॉर द चाइल्ड टू कम बैक एंड फॉर द वीकेंड? नो, यू कैन बुक अ कैब, गो टू द डॉक्टर, पे योर बिल, जी पे करो और आ जाओ. आपका मैम दवाई मिल गई, आपको कैब मिल गई, आपको इमीडिएटली ग्रोसरीज चाहिए, बच्चे का आने का वेट नहीं करना है ना. rather become a strong hand for your child also, who is already working and taking a lot of responsibilities there also. And if a senior citizen is also tech savvy, so it becomes a shoulder even in for the child who is working in the office, isn't it, Mandeep ma'am? Of course, Shefali ma'am, and I do agree with you on the same. And that is why so many ladies across India have joined our program of Tech Ninja, because they want to become tech savvy. I think before learning English, you should be tech savvy first, because you have to take online classes. And for online classes, this course is most beneficial for you, where you can learn how to use this Google Meet and Zoom, especially. वो जो म्यूट नहीं कर पाती ना, म्यूट नहीं हो रहा मैम, अनम्यूट नहीं हो रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज सुन नहीं रही है शिफाली मैम, ये चीजें तो हमारी ट्रेनर स्पोकन इंग्लिश वाली भी स्ट्रगल करती है, स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल करती है. Yes, exactly. So it is not a big thing. हमें कोई चंद्रयान नहीं बनाना है, हमें जैसे टेक निंजा ज्वाइन करना है और टेक निंजा के ट्रेनर्स आपको सब सिखा देंगे. Absolutely right, absolutely right. See, if चंद्रयान बन के जा सकता है मून पे, तो कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है आज के टाइम में. और उसके पीछे भी मेजर पावर थी विमेन की, बहुत बड़ी टीम थी लेडीज की जिन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया. एंड विद द एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मनदीप मैम, जितने हमारे सीनियर सिटीजन सीखने आते हैं ना, दे परफॉर्म आउटस्टैंडिंग इवन टुडे. Exactly. And I'm so delighted to see that above 60 years or more joining Tech Ninja, rather than that young crowd. The elder ones are joining it more. So the enthusiasm should be in you as well. And they are now excited that we have new topics to discuss with our childs. Now the children are also happy to converse with us because they are at par now with them. So now coming to the workshop, which we are here for today. So everyone loves to greet everybody. Everyone loves to greet and to receive the greetings. Both ways. It is a two-way thing, right? How many of you agree to me? You all can use the emojis. आप सबको Zoom meeting में emojis देने आते हैं? Today is communication skills class. Today is a tech savvy class where we have to only use technology to communicate, right? Lovely. Yes. So all those who know, very good. All those who don't know, quickly मैं सिखा रही हूँ. नीचे आपके Zoom में smiley बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आपके emojis है, जिसकी टेक्निकल वर्ड है emoticons. आपको emojis के थ्रू मुझसे बात करनी है. रेस्ट we are active on the chat box also. आप chat box पे भी अपना message drop कर सकते हैं. I want everyone to be there and sending some kind of emojis. If you are happy, if you are not happy, all the emojis are available and we are open to all kind of the emojis.
So it's like Lovely. New Year party we are doing, everybody. So it's Yes. just take it as in a party mood today. And we Thank are you, Sunita expecting your ji. greetings. We are expecting your greetings on first, which we are going to teach you today. So you Before all I, have to send it to your trainers on New Year's Eve. What we are going to teach you today. Okay? Wow, exact, wow, wow. See the exactly. enthusiasm, Shivali ma'am. Your energy is creating, killer vibes in the session today. Thank you, ma'am. So before I start something new to teach, let us just, that is really good. And thank you everyone for following my words and giving me such beautiful emoticons. Let's start. अभी आज जो हम सीखने वाले हैं ना, आप लोगों को स्टिकर्स बनाने के लिए यूजुअली सब लोग बोलते होंगे कोई ऐप डाउनलोड कर लो मैम, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो. नो, वी आर नॉट डूइंग दैट. हम हमारा प्यारा जो आज सबका साथी है व्हाट्सएप, वहीं से स्टिकर बनाएंगे. व्हाट्सएप इस टाइम हमारे लिए फोन से इंपॉर्टेंट हो चुका है. कॉल कर दो, नहीं नहीं मैं तो मैसेज ही कर दूंगी, होता है ये. जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. तो वो तो हमारा प्यारा मतलब फैमिली मेंबर बन चुका है व्हाट्सएप. बन गया? किस किस का नहीं बना है अभी तक, हम बनवा देंगे. बन चुका सबका? ओके. तो चलिए हमारे व्हाट्सएप से ही विदाउट डाउनलोडिंग एनी काइंड ऑफ एप्स, विदाउट डाउनलोडिंग or installing any further application to your current device, this is a feature which we are going to teach you from your very own WhatsApp. Now what I am going to do is I am going to share my screen from my phone. I would request the team to please pin my spotlight my phone, and I am sharing my screen. Okay, just give me a second. Yeah. Is my screen visible to all of you? Yes, yes, it is. Thank you, ma'am. I am now opening my WhatsApp. I have two accounts. One is the WhatsApp and one is the WhatsApp business. But this feature works equally same in both the features. So right now I am opening the chat of our very own Mandeep ma'am. Okay, this is the chat of our very own head of the organization, Mandeep ma'am, and I would be sending some greetings to her. Okay, so for that, what you have to do, just अभी तक आप लोग क्या कर रहे होंगे? आई एम श्योर आप सब जो कर रहे होंगे, ये जो आपका मैसेज बॉक्स है, आप उसमें लिख देते होंगे हैप्पी न्यू ईयर. आई एम श्योर ऐसा ही हो रहा होगा. ओके, बिल्कुल ऐसा ही होता है. दिस इज सो ब्लैंड. वी गेट द मैसेज कि आपने मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला है, बट इजंट इट लुक लाइक वेरी ब्लैंड मैसेज? लेट्स ऐड सम more fire to it. For that, what we have to do is we have the emojis also here. Emoji icon is here. I'm sure few of you are aware of it, and I'm sure few of you are not aware of it. But don't worry, those who are aware, I'll definitely add more to the knowledge. Those who are not aware, don't worry, I am here to teach you. Okay, so click on this emoji. This is called the emoji, or the technical word is the emoticons. Where it is, when you click on the emoji, the first option, very first option is the emoji. What you have to do is just click on the emoji, and you have the all kinds of emojis. You have so many variety in the emojis, right? I'm sure you are aware, you are not aware, that is the second question. If I have written a happy new year message now, and I have added one emoji here, so it sounds that I have sent it with the love. Right, Mandeep ma'am? Of course. Okay. course. Now, what I want to add some motion. Still, इसमें स्टिकर आ गया, इसमें मैसेज आ गया, पर इसमें कुछ ग्राफिक नहीं ऐड हुआ, इसमें कुछ मोशन नहीं ऐड हुआ. हाउ गुड इट विल बी अगर इसमें थोड़ा सा कुछ वीडियो स्टाइल में आ जाए, कुछ एक स्पार्कल जैसा ऐड हो जाए. हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि इसमें कुछ एक मोशन ऐड हो जाए? And of course that too from our WhatsApp only. We don't have to download any app. तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो हम तो यूजुअली शिवाली मैम ऐसे ही भेजते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे भेजना है, हैप्पी न्यू ईयर्स भेजना है, तो हम सिर्फ टाइप कर देते हैं, साथ में कुछ इमोजीज ऐड कर देते हैं. दैट्स इट. Yeah. So those who will raise hand, I am going to teach them only. नहीं तो मैं अपना फोन रख के बैठी हूँ, I will not teach. मैम अब बहुत सारे आ गए.
That's great. I know. I was waiting for that कि Saturday morning सबको ये नहीं लगे कि मैम सुबह सुबह क्या एक इमोजी भेजना सिखा रहे हो. No guys, I'm not here to teach you that much only. I'm here to teach you definitely something more. After the emoticon, second option where it is written GIF. That is what is the topic of the day, right? GIF. What is चलिए the मैम full? पूछ लेते हैं किस किस को पता है यहाँ GIF क्या Exactly. I was about to say that, ma'am. है. So who's Yes. going to share with Okay. us in the chat box quickly? The quickly share in the chat box who all know. And I vouch on that. The students of Tech Ninja, I am expecting answers from you for the full form of GIF. We are not looking for the I know, yes. We want the full form They're of the very smart, Shefali ma'am. I know. They have to be. They are the ninja naris. They're asking the technical meaning of GIF, everybody. What does it mean? You have to tell us that, please. Full form of GIF. Okay. I had one answer. Graphical. Nobody will Google. No cheating, please. ये चीटिंग हो रही है मैम. देखो टेक्निकल है तो गूगल चलो न्यू ईयर क्विज रख लेते हैं इसको. जल्दी से आंसर दीजिए. Very good. I got few answers, which is very correct. It is a graphic interchange format. When we talk about technology, we have various formats. It is the one of the format, not the all the formats. This format says that I have some motion in me, where the graphic is changing from one position to another position. Okay. That is why it is called GIF, which is an abbreviation. Full form is graphic interchange format. Otherwise, if we talk about the rest of the formats, you come to Tech Ninja, we will tell you what is PNG, what is JPG, what is MP3, MP4, what is a PDF, what is PDF standard, what are the layouts, how many layouts we can have a format in. All these things are taught in the classes in depth. And I'm sure you must want to know and must should have a knowledge. एक डॉक्यूमेंट को एज अ डॉक्स भेजना और एज अ पीडीएफ भेजना, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? दोज हु नो प्लीज, आई वांट जस्ट फिंगर्स ऑन द लिप्स. जिनको आता है, जिनको नहीं आता, ज्वाइन टेक निंजा. राइट? So coming back to my screen, and now we will learn how to create a GIF. Again, coming back to Mandeep ma'am's chat. Is that open? Yes. Now what we have to do, we are not here to click the emoticon option, which is the first one. We are not going to use it. Rather, we are going to click on the GIF. Can you see immediately so many GIF existed on my screen? These are available by default. Okay. So let's say, if I say, चलो मेरे साथ, I wanted to just send a GIF to Mandeep ma'am, चलो मेरे साथ for the New Year party. तो मैंने एक इमोटिकॉन भेजा और नीचे टेक्स्ट किया for New Year party. Right? So अभी पहला जो था वो स्टिकर टेक्स्ट गया. Then नेक्स्ट जो था उसमें एक स्टिकर डाल के भेजा. अब मैंने एक GIF के थ्रू बात की है कि चलो मेरे साथ for the New Year party. Right? बट नाउ व्हाट आई वांट, नेक्स्ट स्टेप, आई वांट कि इस GIF में ही कुछ टेक्स्ट ऐड हो जाए. मैंने ये जो नीचे टेक्स्ट ऐड किया है वो थोड़ा सा ना अलग सा लग रहा है. उसी GIF में अगर मैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी अदर एक्स्ट्रा ऐप में इसी में कुछ एडिटिंग कर दूं तो मनदीप? ऑफ कोर्स, फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा, फिर तो ओरिजिनल बन जाएगा वो. राइट जी जी. तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि आई एम अ एंड्रॉइड यूजर. एंड्रॉइड यूजर्स में क्या होता है, जब आप GIF किसी को सेंड कर देते हो, उसके बाद व्हेन यू क्लिक ऑन इट, देन यू गेट द ऑप्शन टू एडिट इट फर्दर. फॉर द आईफोन यूजर्स, आप GIF बिफोर सेंडिंग उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो. अब मुझे इसमें मनदीप मैम को भेजना है चलो मेरे साथ फॉर द न्यू ईयर पार्टी. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट द सेम GIF and click on the three dots here. Three dots visible हुए सबको? These three dots. यस. Okay. So click on these three dots and the first option. Go for the first option, which is edit. Click on edit and you have the option. Three options again you have. One is the sticker, text and pen. So right now what is my objective? My objective is to add a further text to it.
for right? And not only this, अब मैंने ये text तो add कर दिया, but still it is white and black. I'm not so happy for it. So I have a color bar here. This bar is the color palette. I want to add a red color to I it. think we can ask everyone to perform with the Shifali ma'am. You all can open your WhatsApp, everybody, and do it live here. So that if you have any doubts in case you are not able to understand, you can ask your questions through chat box. So if you know how we are using it, try to do it live with the trainer. Yes. Yeah. That would be even great because all your doubts will be solved on the spot, the way we do in the classes. Right? अभी मैंने क्या किया, वो white background है, but text में मैंने color दे दिया. There is a beautiful color added to the text. If I want to change color, there are many more other color options also. So isn't it more interesting now that we can add the color also? But now the next question problem I have is, मुझे वो जो background का color है ना, वो हटाना है वहां से. That is bothering my eyes कि ठीक है, text color is doing fine, but I'm not happy with the background color. So can you see on the top? I'll just mark it where I'm talking about. 1 minute. This option. When you click on this option, it helps you to change the color of the background of the text. When you click here, it gives you. Now, if you keep clicking it, it do give you the option to remove the background or add it as the same image. Now there is no background color. Now isn't it looking more pretty that for a New Year party? And click on the done. It's done and I can always resize it. And मैंने ये जो चलो मेरे साथ के साथ इस टेक्स्ट को भी ऐड कर, right? And then I will send it. So my whole message sent through one GIF. मुझे कुछ further text नहीं किया है मैंने. I have few hands raised. Those who have any questions, you can please type in the chat box. Just give me a minute. मैम फॉर नेक्स्ट प्लीज दोबारा से रिपीट करना एक बार ना पूरा प्रोसीजर. मैनी लेडीज आर आस्किंग. Okay, I will start from the beginning. Okay. So this time, right now, what I have sent her is chalo mere saath for the new year party. Okay. So I'll repeat the same process. What you have to do is just click on the emojis option. You don't have to go anywhere. On your message bar, जो आपके WhatsApp में जिस particular chat में आपको भेजना है, उसके message bar में आपको only your emoji पे click करना है. I'll just mark it for you all. What is the first step? This is the first step. This is the message bar. This is what we call as a message bar. On your message bar, you just have to click on the emoji. And when you click on the emoji, you have the first option, which is the sticker. Already emoticon, smileys we bolte hai. We call it smileys. Emoticon is a technical word, or the emoji. And you have many emojis here. But we are here, हमें emoji नहीं भेजना है ना, हमें तो GIF बनाना है. So second option here is the GIF. Second is the GIF. Is it clear, everyone? Yes, I think some of them are asking regarding iPhone. So is it same for the iPhone also, Shifali ma'am? Yes, ma'am. ये option जो GIF sticker का है, it is there. The only variation comes कि Android users जब एक बार GIF send कर देते हैं, उसके बाद उसको edit का option करते हैं दोबारा click करके. For the iPhone users, they can do it. They can edit it even before sending it. Okay, that's great. Yes, ma'am. Message bar is not visible. आप अपना फोन ओपन कीजिए. I would request all of you to open your own WhatsApp. मेरे ही नाम की चैट ओपन कर लीजिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और नीचे मैसेज बार व्हाट इट इज जहां पे आप नॉर्मल अपना WhatsApp का मैसेज टाइप करते हो. दिस इज द मैसेज बार. वी कॉल इट अ मैसेज बार, राइट? And this is like we have to send the audio message. So this is the message bar, this is the audio message, and the first where it is smiley, we call it a sticker. Now we have to add a emoji. I want to send one emoji which I already said chalo mere saath. So now
Coming to the next level to it, I want to send it for the Happy New Year. I want to say Happy New Year. ठीक है, पार्टी हमारी सॉर्टेड है, बट अभी मुझे फर्स्ट को उनको हैप्पी न्यू ईयर भी तो बोलना है ना, हम पार्टी कर आए. तो अब मैं क्या करूंगी? What we have to do is we have to search for the emoji. To search for the emoji, I will be using the lens. Can you see? There is a lens also, which usually we miss on. So when we click on the lens, we can actually search by typing it. On this area, can you all see? On the top, when we click on the lens, there is a search bar. We call it a search bar. And click on it and we will write here. Happy New Year. Moment I typed there, Happy New Year, I have so many inbuilt emojis available here for the Happy New Year. And now what is my objective? My objective is I will choose one GIF. See, this is what we are saying about the motion. This is a GIF and it has the sparkles moving on and off, on and off. That is, graphic is changing every second. So now I'll send it. And no worries, students, we will be sending you PDF notes also with screenshots, which you can refer after the workshop. So no worries. If you're not able to do it right away, because you're watching the workshop also from your mobile phone, so skip it. You can write down the notes, and we will also provide you with the notes with screenshots, which you can refer after the workshop to get it done by yourself after the workshop. Okay? Yes, don't worry anyone. We are showing you the technique and definitely come join us. We will teach this in the classes also. Now next is, I have sent her a GIF. I want to add a text. So click on the same sticker again and you get the 3 dots. From these 3 dots, you get the option to edit. But again, this is for the Android users. iPhone users send करने से पहले ही आपको edit का option आ जाता है. हाँ, एप्पल यूजर्स के लिए ही बोल रही हूँ मैम, एडिट करने के बाद आपको सेंड करना है. आईफोन यूजर्स एडिटिंग करने के बाद आप सेंड करेंगे, एंड जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो सेंड करने के बाद एडिट करके फिर से सेंड करेंगे. नाउ आई वांट टू ऐड अ टेक्स्ट हियर व्हिच इज हैप्पी न्यू ईयर. I don't want to add it in the message box. I want to type it. So I'll be taking a T option, which is a text option. This option I would be taking up now, the second option, and type here. So happy new year. Again, same thing is मुझे इसका color change करना है and मुझे इसका background remove करना है. All sorted. Another feature which is available here is the font. Can you see? I can change the font also. Now I am working on the font style of the text. Is it visible, everyone, where I am changing the font? So I can change the font. Now my font is sorted. If I want to have it on the left side of the screen, center or the right, so I have the alignment option also. This is called the alignment option. Click on the alignment and now your text is on the left side. This is the right side and this is the center. It is your choice where you want to have it. Okay. And last but not the least is the done. Moment you click on done, just squeeze your text. Resizing. You maybe squeeze or resizing is a more technical word here. Resize it. And wherever on this GIF you want to place it, with your finger you can move it. See, I'm doing it with my finger only. And if I want to have it in the corner here. Okay, done. But I still want to add more to it. What I want to add more to it? I want to add 2024. Okay, this is the text and then done. And I have added 1 minute. I'll just squeeze it and rotate it. Nice. So I think all of you are already enjoying this beautiful session
on learning how to use virtual greetings. So do share your emojis, please. I think this will motivate the trainer that whatever she's teaching, you're enjoying and liking it. So this is a new way of using your own WhatsApp to send greetings to your near and dear ones. So this is beautiful. And now it's done. And now I have sent it. See, Mm. this is how it has been sent to her now. Mm. This is the final outcome of it. And still more fire can be added to it. Are you up for adding me to the more fire to it, or you are content with this? Then I am also happy. Let's stop it here. So If anyone wants to add it, fire it up more, please let me know. More, wait, we okay. want more. Say, we want more. Yes. I want it. I want it. Then only I'll give it. Nice. Background, I'll repeat, ma'am. I'll do it again. Okay? Click on the same emoji. I'm clicking on the same emoji in which I have already added the text. The text is, I'm sorted with the text. I'm sorted with the GIF. Now what I want is, I'll just click on the three dots again and click on the edit. Now I want to add some sticker also here. So click on the stickers and I will be adding one sticker. Done? Bit of more sparkle added to the design. So I have added one more sticker. And if I want to personally do something with my own freestyle, then there is a pen option also, and I can just add some dots also. Just give me a second. This way I can do the personalizing also. And see, I have given the corners to it. And done. Done? Mandeep ma'am, there is a Yes, sticker yes, of also. course. And this is the final outcome. Now what it is? Ma'am, you have to, once you send the GIF, then click on the GIF again. Then only you will get these three dots. आपने जो GIF भेजा है उसको दोबारा क्लिक कीजिए, जैसे हम एक पिक्चर को क्लिक करते हैं ना किसी को सेंड करने के बाद मैसेज, तो आपने एक GIF सेलेक्ट किया, किसी को सेंड किया, उसी GIF पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सट्रीम राइट में थ्री डॉट्स दिख जाएंगे। And the best way to do is कि आपको किसी को final outcome ही भेजना है. WhatsApp does give you the option for the personal chat also. Nowadays WhatsApp has been so much updated कि आप खुद को मैसेज कर सकते हैं. तो आप वहां पे अपना GIF क्रिएट कीजिए और भेज दीजिए जैसे भेजना है. क्वेश्चन है मैम, वो लड़की कैसे आई? वो सरप्राइज है, इसके लिए आपको क्लासेस में आना होगा. क्योंकि वो मैंने पर्सनली क्रिएट किया है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑल्सो. अब सारा राज यहाँ नहीं खुलेगा ना मैम, धीरे धीरे खुलेगा. यस. एंड अभी इसमें थोड़ा और भी मैं इसको पर्सनलाइजेशन दे सकती हूँ अगर कोई लेना चाहे तो, पर वो सिर्फ मैं दिखाऊंगी, लेने के लिए क्लास में आना होगा. देखो यहाँ पर शिफाली मैम आपको यही चीज देखो, वी वांट टू मोटिवेट यू बाय गिविंग दिस वर्कशॉप दैट स्किल निंजा अकेडमी इज वन प्लेटफॉर्म वेयर मल्टीपल लर्निंग कैन हैपन. So if you are a spoken English student, you can now go into a technical course also and explore your other skills with us. And this is just a teaser which Shivali ma'am is giving to you. But once you will be in our classes, you will be seeing and watching these things in detail and would be doing practically with your trainer. So this is going to make a difference in your technical skills as well. So those who are interested, they can keep on writing their names and numbers in the chat box. Our team will connect with you. तो मैम अभी आ रहा है, we want more शिफाली मैम. So I think they need something else also. Okay. So I just want to show, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं इसको और पर्सनलाइज कैसे कर सकती हूँ, उसका मैंने एक रेडी टेम्पलेट बनाया है which is added. ये आपका WhatsApp कमाल कर रहा है ना. अभी तक हमने कोई एक्स्ट्रा ऐप नहीं डाउनलोड की, नो फर्दर परचेजेस है यहाँ पे. Just with the very own WhatsApp, we can do so much wonders. So why not make it more personalized? Yes, Sushma ji, our team will definitely contact you. देखिए, ये मैंने अपना खुद का बनाया है. Can you see?
It has me and my husband's personal picture. तो वो सुंदर सी लड़की की जगह मैंने हम दोनों को खड़ा कर लिया, and it is like personal message from my family to anyone else. तो ये कैसे हुआ? इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा पूरा एक. There is a very beautiful and a very creative software where learning seriously have no bounds. On that platform, you can learn designing to any length, which is Canva. So this personal picture doesn't even have any kind of a background. Original picture does have a background, but on that platform, we do teach you how to make a cutout of your this is a wedding picture. I went to some wedding. वहां से मैंने पूरा background निकाल के उसमें से सिर्फ अपना दोनों का cutout बनाया और इस sticker पे ऐड कर दिया. अब how it is possible? That is done by a very efficient software, I must say, and very people friendly software which everyone should learn nowadays. आपके बच्चे हैं, आपको ग्रीटिंग सेंड करने, इवन आपको पार्टी इनवाइट्स बनाने हैं, आपको न्यू ईयर कैलेंडर्स बनाने हैं. देयर आर सो मच टू लर्न अबाउट on that platform. That can be done on the software. For that you have to not to buy but need to learn the software. So Tech Ninja की एक सबसे बड़ी USP ये है, just enroll for the course. There are no further purchases. Everything will be taught on the free version. We will not ask you to spend even a single penny for any kind of further purchases. No installation, no further documentation, no further apps, no further connections. We are not using any third-party connections. Further, only purchase the course and all the learnings will be free of cost up after the purchase. And that too very light apps, which will not make your phone heavy, and you would be facing any other issues with your gadget. So that is also one thing which we are teaching over here. And we want you all to understand that this is something which is need of an hour these days. Being tech savvy is very important. And we all should understand that every day we are using Paytm, GPay, PhonePe. Still, we don't know how to make the payments online. We are, still using the diaries to make the notes. We are using Excel. We are not using Excel. We are just using our notebooks to make the counting of our grocery expenses. So, ये सब कुछ अब आप अपने phone में ही कर सकते हैं. By knowing the Excel, by understanding the in depth of technology, which is trending and it is there in your phone only. That is what Shifali ma'am is sharing with you all, that this is just a glimpse and teaser of what we teach in our classes. So I would want to request all my students who are from spoken English, not from Tech Ninja, who are already Tech Ninja students, they can enroll for the spoken English classes. But the ones who are spoken English students, they can please write their names in the chat box. Our team will connect with you and we will arrange a demonstration for you where you can observe this course more closely, and you can join our Tech Ninja team to learn these things, which will be much beneficial for you. So I think today's workshop was mesmerizing. It actually gave us the insight of how to use the things which are already available in our mobile phone only, and that too in our most favorite app, that is WhatsApp. I think these days without WhatsApp, life is incomplete, right, Shifali ma'am? बिल्कुल बात. सो आई थिंक ऐप को प्रॉपर यूज करना नहीं आता हमें, हम सिर्फ उसमें चैटिंग या किसी को फोटो भेज दिया, मैसेज भेज दिया. इनफैक्ट बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी होती है शिफाली मैम जिनको लाइव लोकेशन शेयर करना नहीं आता. लाइव लोकेशन करंट लोकेशन में क्या डिफरेंस है, किसी को कॉन्टैक्ट कैसे सेंड करें, आई थिंक ये सब चीजें हमारे व्हाट्सएप में ही होती है. मैम सबसे बड़ा जो आजकल सबको चैलेंज आ रहा है ना, कि हमारे फोन में जो भी व्हाट्सएप में फोटो आती है ना, हमारी गैलरी भर जाती है मैम, रोज ही फोन हैंग हो रहा है. तो आई जस्ट वांट टू से हियर इज those who all are facing any technical issues, please leave them in 2023. Let's move on to 2024 with all the technical wings around us. Yes. Right? And all these are possible. आपकी प्रॉब्लम है मेरा व्हाट्सएप का डीपी मैम, मेरा दूध वाला, सब्जी वाला. एक हाउसवाइफ के सबसे ज्यादा नंबर कौन से होते हैं? अखबार वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, काम वाली माई, बच्चों की स्कूल में जो गेट कीपर है, बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर. दे आर द मोस्ट यूज्ड नंबर्स. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू मी फॉर दिस?
ओके, आई हैव सो मेनी पीपल अग्रीइंग विद मी कि हाँ मैम, सबसे ज्यादा बात तो हम इन्हीं लोगों से करते हैं और हर रोज करते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा स्टेटस देख लेते हैं मैम, मेरा स्टेटस थोड़ी ना, मैं अब स्टेटस पिक्चर, पर्सनल पिक्चर थोड़ी, इन लोगों के कमेंट थोड़ी ना मैं एंटरटेन करूंगी, वो एक नीड है। मेरा व्हाट्सएप पे डीपी लगा हुआ है, वो लोग देख रहे हैं मैम जाके, अभी उसको कैसे रोकना है? दैट इज पॉसिबल गाइज, दैट इज पॉसिबल। आप लोग कैसे उन लोगों को बिना अपना स्टेटस दिखाए अपनी प्राइवेसी सेट कर सकते हो? आपकी फोन में रोज व्हाट्सएप इतने सारे मैम ग्रुप्स ऐड कर लिए हैं हमने, बट प्रॉब्लम क्या है, रीसेलर ग्रुप्स हैं हमने कर लिए, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट मेरा फोन का गैलरी क्यों भर रहा है? डोंट वरी गाइस, टेक निंजा इज हियर टू द रेस्क्यू। हम आपको सिखाएंगे। आपकी लोकेशंस, आपको पता है देर इज अ डिफरेंस इन द करंट लोकेशन एंड लाइव लोकेशन। करंट लोकेशन यू कैन एक्टिव अप टू 24 आवर्स। अब कैब में कहीं जा रहे हो या आपका बच्चा जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, अननोन प्लेस पे जा रहा है, आपको वहां पे 2 से 3 घंटे रहना आपकी मजबूरी है, बट लेडीज को चैलेंज है, पीछे फैमिली कैसे आपको ट्रेस करे? करंट लोकेशन ऑफ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ आवर कैसे रेज कर सकते हो? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन विच लेडीज आस्क मी इन द क्लासेस, मैम ये जो आप पोल रेज करके भेजते हो ना, ये तो सिखा दो कैसे करोगे। तो ये हमारे एडवांस